Hello everyone, today we are here to solve question number 1822 of LeetCode. Sign of the product of an array. Input type is list and output type is int. Means what? एक list दी हुई है, बहुत सारे elements है उसमें लगे हुए, and we have to determine the sign of the product of numbers. Okay, so let's see what is the question. There is a function sign func that returns 1 if x is positive, minus 1 if x is negative, and 0 x is equal to 0. We have written 1 for positive, minus 1 for negative, and 0 for 0. Okay. You are given an integer array nums. Let product be the product of all values in the array nums. Return sign func of product means we have to return the value from this function. Let's see the example. Nums minus 1, minus 2, minus 3, and if you product all the values, जितनी भी वैल्यू इसमें दी हुई है सबको एक एक करके मल्टीप्लाई करेंगे करो, इसका सिंपल आउटपुट आएगा 144. सो द आउटपुट इज 1. बट ये तो हो गया बेसिक तरीका कि यार सबको मल्टीप्लाई किया, देन जो साइन आया उसके हिसाब से हमने रिटर्न कर दिया. बट थोड़ा ट्रिकी सोचें अगर तो क्या हो सकता है इसके सॉल्यूशन. कुछ समझ में आ रहा है? बेसिक मैथमेटिक्स के हिसाब से अगर सोचें, अगर दो पॉजिटिव नंबर हैं उनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आएगा? पॉजिटिव. एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, क्या आएगा? नेगेटिव. दो नेगेटिव है तो क्या आएगा? पॉजिटिव. कुछ समझ में आया? अगर नंबर ऑफ नेगेटिव इवन है तो पॉजिटिव ही आएगा. अगर नंबर ऑफ नेगेटिव नंबर्स ऑड है तो नेगेटिव आएगा. एंड व्हाट अबाउट अवर थर्ड केस? जीरो. प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी तो पता ही है, जीरो को किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे वो जीरो कर देगा, है ना? तो लेट्स सी. सबसे पहले तो हम जीरो चेक कर लेते हैं. जीरो इन नम्स. जीरो चेक कर लिया. अगर नम्स में जीरो है तो सिंपल हम जीरो रिटर्न कर देंगे. We first check zero in nums. If there is a zero, then we simply return zero. Now what? We will count the number of negative numbers because we have to return just sign of the product of numbers, not the actual product. Okay, so we simply count the number of negative numbers. For this, I am taking one loop to do complete iteration, and if I is less than 0, negative value of negative number is increased by 1. Okay, and what we have to return? 1 if modulo of negative number is equals to 0, else minus 1. अगर number of negative numbers even हो गए, so what it will become? Positive. In the case of positive, what we have to return? Here we have seen 1. Okay, and else minus 1. And for the third condition, we had done it here on the first line. So let's see. Let's run the code. Yes, it's working properly. Let me check this with other example. Okay, run the code. Yes, it's working fine. So let's submit the code. Let's see what happens. देखते हैं. Yes, it's working properly and 100% faster. समझ तो आ गया होगा, बहुत easy सा कोड है. Just some number of negative number count किए हैं. On the basis of that, you return the 1 or minus 1. Okay, I'm moving with this question and going to the next. We will meet in the next video. Up to then, bye bye. See you soon.